Hello friends, this is your hydraulic expert Pankaj Srivastava, and today I am not going to give you tell you anything about technical things. And आज कोई ज्ञान नहीं बटेगा। आज मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को the process involved in hydraulic pump repairs at our workshop. Okay, so I'll share the video and Precision Hydraulic Engineers is dedicated to provide quality service to the customers in the field of hydraulics for the past 32 years. Let me take you through a quick journey of process and facility at Precision Hydraulic Engineers. This video focuses more on the process while the component may be different. यहाँ पे ये एक ओपन सर्किट का पंप दिखाया गया है। ये किसी और पंप के कंपोनेंट्स हैं। इट्स 46 सीरीज क्लोज सर्किट पंप। सारे जितने भी बोल्ट्स पंप में होते हैं वो सारे उसकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से टॉर्क किए जाते हैं और फिर सारे पंप जो हम असेंबल करते हैं जितने भी उनको हम प्रॉपर टेस्टिंग करते हैं। वी हैव अ टेस्ट बेंच। इसमें ये एक दूसरा पंप दिखाया गया है 20 सीरीज का विद एडीसी कंट्रोल। तो उसमें ये चेक किया जाता है कि उसका प्रेशर प्रॉपर बन रहा है, पंप न्यूट्रल कंडीशन में ओके है, उसकी जो लीक रिटर्न लाइन है उसमें से कितना ऑयल आ रहा है, क्या वो लिमिट के अंदर है। सारे पैरामीटर्स की नोट किए जाते हैं एंड इसका एक वीडियो बनाया जाता है जो अगर कस्टमर डिमांड करे तो उसको दिया जाता है। एंड आफ्टर असेंबली कम्स आवर टेस्टिंग। पूरा उसकी जो वापस फिटिंग्स जो फोटो से क्रॉस चेक की जाती है एंड उसको फिर पैक किया जाता है प्रॉपर। ठीक है, जितने भी कनेक्शंस हैं उनको एक प्लग से सील किया जाता है ताकि उसमें कोई गंदगी ना जाए। उसके बाद पीआई भेजते हैं हम लोग। जब कस्टमर पेमेंट कर देता है तो उसके बाद उसको सारे पेपर्स हैंड ओवर करके and we just deliver him the component which has been repaired.
इसमें आप हो सकता है कि आप नोटिस करो कि ये पंप कोई और आया था, गया कोई और, बट ठीक है, दिस इज जस्ट टू शो यू द प्रोसेस। हमारे पास रोज डिफरेंट तरह के पंप्स आते रहते हैं, and we just tried to show you the procedure we adopt to repair any pump which comes to our workshop. So hope you like it, okay? And basically, I welcome any inquiries for your hydraulic repairs, your hydraulic training. The details of my contact numbers and other details are given in the end of this video. Thank you. Hope you enjoyed this, and I will also keep telling adding videos like this between the educational videos I am posting. Okay. So thank you. Enjoy this video. Thank you very much.